guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This class is all about MEG09. This is all about Australian literature. Now, what we guys need to clear about Australian literature and how we're going to prepare for this particular paper and कौन सी चीजें हमें दिमाग में रखनी. Now, seriously, we don't have much time, sir. Seriously, the last our video for the student, those are waiting for MEG09 video. Honestly, एक बच्चे कमेंट किया सर MEG9 के लिए कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है बच्चा, नहीं. डेफिनेटली वीडियो थी आपकी, मैं बना के डालने वाला था, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं हो पाए. इवन मैं इसको पोस्ट भी किया था, वीडियो नहीं अपलोड हुई, तो दोबारा से बना रहा हूँ इस वीडियो को आप लोगों के लिए. तो इसको फॉलो करना आप लोगों ना. आप लोगों का करना क्या है सर, लास्ट आर पे कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें ऑन टिप करने. तो पहले तो 2-4 चीजें क्लियर कर लो यार. सबसे पहले पोइट्री सेक्शन को क्लियर करो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं पोइट्री से. आई रिपीट, आप इसके 4 से 5 पार्ट बना लेंगे इस पेपर को क्रैक करने के लिए. आपने सर 4 से 5 पार्ट कौन से होंगे, कौन कौन से करने हैं. एक हो गया सेक्शन पोइट्री का जो आपको ऑन टिप करना है. फर्स्ट पोइट्री, सेकेंड वॉस, हाँ रिपीट वॉस, VOSS वॉस, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. चीज़ों को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना, इससे क्वेश्चन आएगा. देन वी आर शॉर्ट स्टोरीज. यस, वी गाइस नीड टू क्लियर शॉर्ट स्टोरीज. मेरी एडवाइस रहेगी कि सबसे पहले पकड़ना शॉर्ट स्टोरीज को. छोटी छोटी हैं, हार्डली 2 और 3 पेजेस, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. और इनकी वीडियोस भी मिल जाएंगे इस चैनल पे. हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस. यस, गो विद शॉर्ट स्टोरीज फर्स्ट ऑफ ऑल. सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज को क्लियर करना है. जंप टू पोइट्री. हाँ रिपीट, जंप टू पोइट्री. पोइट्री के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उन क्वेश्चन को करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना. तो आपने कहा सर सबसे पहला स्टेप होगा हमारा शॉर्ट स्टोरी का. देन विल कम टू द शॉर्ट स्टोरीज के बाद पोइट्री. पोइट्री के बाद आओगे आप रिमूव लिस्ट के ऊपर. हाँ रिपीट, रिमूव लिस्ट. सर ये तो करना ही करना, मतलब किसी तरह से ये हमें आना ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक. एंड देन रिमेम्बरिंग बेबीलोन. तो चॉइस एंटायरली 100% क्वेश्चन आएगा. रिमेम्बरिंग बेबीलोन का क्वेश्चन होगा हमारे पास रिमूव लिस्ट का क्वेश्चन होगा, हमारे पास शॉर्ट फिक्शन होगा, हमारे पास वॉस होगा, हमारे पास पोइट्री होगा. 5 क्वेश्चन करने हैं, सीरीज 5 क्वेश्चन. सर एक ऑप्शन भी दूंगा आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए. तो कहाँ से शुरू करें? शुड वी स्टार्ट विद द पोइट्री सेक्शन, वॉस, शॉर्ट स्टोरी, रिमूव लिस्ट और बेबीलोन? चलो यार बेबीलोन से शुरू करते हैं. राइट ऑन द क्वेश्चन गाइस, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये क्वेश्चन हमें ऑन टिप होने चाहिए. तो अगर ये क्वेश्चन ऑन टिप होंगे आपके, तो आपका एक भी चीज़ गलत नहीं होने वाली. सीरियसली एक भी चीज़ गलत नहीं होने वाली. तो क्वेश्चंस को क्लियर करना है, चीज़ों को समझना है, एंड दिस इज व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ. यही 3 क्वेश्चन मोल्ड होके आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला. इन्हीं क्वेश्चंस की लैंग्वेज साथ खेलेगा ज़्यादा एग्जामिनर. फर्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ मेमोरी इन बेबीलोन? सो व्हाट इज द रोल ऑफ मेमोरी इन रिमेम्बरिंग बेबीलोन? सर नाम ही रिमेम्बरिंग है. फ्लैशबैक्स, ऑनेस्टली फ्लैशबैक्स, पूरी स्टोरी फ्लैशबैक्स में. ये आपने इंग्लिश ऑनर्स 4th सेम में पढ़ी हुई स्टोरी. आई होप कि जिन्होंने इंग्लिश ऑनर्स की हुई है उनको याद है. नहीं याद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वीडियो डाली हुई है, आप वीडियो देख सकते हैं. तो फर्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ मेमोरी इन रिमेम्बरिंग बेबीलोन? नंबर 2, रिमेम्बरिंग बेबीलोन इज द स्टडी ऑफ द एज ऑफ ओल्ड ह्यूमन प्रॉब्लम्स of exile. So this is something very much connected with the summary of this particular story. तो एक्चुअली उसकी ओल्ड एज प्रॉब्लम्स ही डिफाइन की गई पूरी स्टोरी में. नाउ शी इज एट दैट स्टेज जहां वो फ्लैशबैक्स में सब कुछ याद करी, मतलब किस फेज से निकली एंड हाउ शी डिड सर्वाइव, वो साइज इंपॉर्टेंट हमारे पास. देन वी हैव द नेक्स्ट वन, critically examine remembering Babylon as a masterpiece of narrative skills. नैरेटिव स्किल्स सर ये रिमूविस्ट में काम आएगा, वॉस में भी काम आएगा, नैरेटिव स्किल्स वाला काम. तो इसको ऑन टिप कर लेना आप, मतलब सीरियसली छोड़ने वाला नहीं यार. तो मैंने कहा क्रिटिकली एग्जामिन रिमेम्बरिंग बेबीलोन एज अ मास्टर पीस ऑफ नैरेटिव स्किल. कितने हो गया सर? हमारे क्वेश्चन हो गए 3. मैंने कहा 3 आर मोर देन इनफ. कम टू रिमूव लिस्ट. सर रिमूव लिस्ट अगेन अ स्टोरी दैट इज टू रिमेंबर. ऑनेस्टली अगर ये बोल रहे, रिमूव लिस्ट इज अ क्रिटिक टू ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी. यस, इट्स अ क्रिटिक टू ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी. क्वेश्चन भी यही है हमारा. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है, हाउ इज द रिमूव लिस्ट इज अ क्रिटिक टू ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी? आई रिपीट, हाउ इज द रिमूव लिस्ट अ क्रिटिक टू ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी? ये ऑन टिप कर लेना गाइस, इसको छोड़ना नहीं है आपने. नेक्स्ट वन, व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले? व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले? द रिमूव लिस्ट. कुछ नहीं करना, नोट्स में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उन आंसर्स को ऑन टिप कर लेना. यस, उन आंसर्स को ऑन टिप कर लेना. 100% सारे आंसर आते होंगे आपको. व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले? द रिमूव लिस्ट. विच इन योर ओपिनियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज?
तो यार थीम्स तो है मेरे पास, मैं उन कौन सी थीम को डील करता हूँ और मेरे हिसाब से कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है उसको डिफाइन करना है. नेक्स्ट वन, डेविड विल्सन. आई रिपीट, डेविड विल्सन इज परहैप्स द बेस्ट नोन ऑस्ट्रेलियन ड्रामेटिस्ट. Subsequent the statement referred to the play The Removalists. Yes, अब इस प्ले के अंदर से कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है कि जो उसको बेस्ट प्ले राइटर बनाता है वो डिफाइन करेंगे. लास्ट नॉट द लीस्ट, इसको मैं ऑस्ट्रेलियन ड्रामा पे क्वेश्चन करूँ तो बेटर है. कह रहा है कमेंट ऑन द ऑस्ट्रेलियन ड्रामा इन 19th सेंचुरी. यस, कमेंट ऑन ऑस्ट्रेलियन ड्रामा इन 19th सेंचुरी. तो भाई मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. आई नीड टू नो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करना है, करने का तरीका क्या होगा. तो वही दो फर्स्ट हो गए मैंने. आई रिपीट द फर्स्ट टू. The first two are now I'll come to the short stories. सर कौन कौन सी शॉर्ट स्टोरी करनी है पहले लिख लेते हैं. शॉर्ट स्टोरी कौन कौन सी करोगे आपके दिमाग में होनी चाहिए. सर मैं तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मेरे को शॉर्ट स्टोरीज तो ऑन टिप होनी चाहिए. अभी शॉर्ट स्टोरी में कौन सी वाली करूँ, किस पॉइंट को क्लियर करना है, कहाँ से करना है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे जो मेरे लिए डेफिनेटली एक कहता है ना फ्रूटफुल वर्क हो, जिसको मैं करूँ तो मैं चीज़ों को क्लियर कर लूँ. तो सबसे पहले आप करोगे द यूनियन बरीज इट्स डेड. आई रिपीट द यूनियन बरीज इज डेड, पहली शॉर्ट स्टोरी. Number 2, Harry Lawson's work. Sir, this is the drawer's wife. I repeat, the drawer's wife. इसको मत छोड़ देना यार, किसी भी हाल में मत छोड़ना. The drawer's wife. Next one. Now at Shagger's funeral. At Shagger's funeral. Sir, last two. Yes, last two 5 short stories हैं. 5 को करने में हार्डली 50 मिनट लगेंगे. 10 minutes for one. Maximum 10 minutes. One short story. I repeat the first one, the Union Bullies is dead. Number 2, we have the Drover's wife. Number 3, Ash Sugar's funeral. Next, Cranky Jack. ये मेरी फेवरेट है. Next, the Chosen Vessel. ये तो फैमिली स्टोरी है, या फैमिलिस्ट है यार, उसको कोई डाउट नहीं है. हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चीज़ों को समझना भी है. कम अप टू द क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चंस को हमें करने हैं शॉर्ट फिक्शन से ऑन टिप होने चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिस्टीना स्टेड इज ए एक्सीलेंट स्टोरी टेलर. सर दिस इज नॉट अ शॉर्ट स्टोरी, दिस इज समथिंग आउट द राइटर या द शॉर्ट राइटर्स. हाँ उन पे आता, क्वेश्चन क्यों नहीं आता. क्रिस्टीना स्टेड इज एक्सीलेंट शॉर्ट स्टोरी राइटर. डिस्कस द रेफरेंस ऑफ वन ऑफ हर स्टोरी. आई कैन गिव द आंसर. चेक आउट माय नोट्स. ठीक है, यू हैव दैट. नेक्स्ट वन, डिस्कस द ओरिजिन अर्ली ग्रोथ ऑफ शॉर्ट फिक्शन इन ऑस्ट्रेलिया. Discuss the origin. I repeat, discuss the origin and early growth. Origin, early growth of short fiction in Australia with example. Next, discuss the place of David Maloff. Discuss the place of David Maloff in contemporary Australian fiction. David Maloff का role in contemporary Australian fiction. We guys need to clear. Come on, next one. This is something very, very important. In what ways now, I repeat, in what ways are the drovers portrayed as hypocrites? In what ways are the drovers portrayed as the hypocrites in the Union Buries is Dead? Illustrate from the text or support your answer. Next one. Henry Lawson is an adopt storyteller. Yeah, he was an adopt storyteller. So, इसका both example how I was referenced in Drover's wife. Can Henry Lawson is an adopt storyteller explained with the reference of the story, the Drover's wife. Next, examine the pressures. Yes, examine the pressures of contemporary life explode. Examine the pressures of contemporary life explode in Ed Sheger's funeral and their consequences. Next one. Cranky Jack is a story that attempts at dismantling. Cranky Jack is a story that attempts at dismantling patriarchal authority. Discuss. Next one. Discuss the Chosen Vessel as a feminist story. Chosen Vessel as feminist story. Jump up next part. Remove list. First, how is the remove list a critique of Australian society? How is the remove list? I repeat, how is the remove list a critique of Australian society? Number 2, what are the major themes? I'm repeating. What are the major themes of the play The Remove List? Major themes क्या हैं? कैसे काम करती हैं? करने का तरीका क्या है? What are the major themes of the play The Remove List? ये तो हम कर चुके हैं यार. Why don't we do it again? Sorry to say, this is a waste of your time. तो 2 मिनट खराब कर दिए मैंने आपके. Come up to the next one. Here we have the next one. सर अब आ गए हम किस पे? The Was. This is something very, very important. सर शॉर्ट स्टोरी कर ली है, पोइट्री का सेक्शन कर लिया है. अब मेरे पास आता है Was, उसको क्लियर करना है. तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं. यहाँ पे आके हमारे पास कुछ 4 क्वेश्चन Was से. Just 4, not more than 4. Was is essentially based the theme of exploration. Yes, the theme of exploration. Should I repeat this question?
The was is essentially based on the theme of exploration. Discuss. In what ways is was an emotional complex novel? In what ways in was an emotionally complex novel? Emotionally or complex novel भी है. Discuss. Discuss different features of human relationship. Discuss different features of human relationship in was. Next one. What are the various aspects of romanticism? What are the various aspects of romanticism in Patrick White was? पैट्रिक वाइट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखना प्लीज. क्या था व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रोमांटिज्म इन पैट्रिक वाइट वॉस? डिस्कस. सर आज हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज योर पोएट्री. जो मैंने कहा था सबसे पहले पोएट्री कर लेना है. हार्पर का क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा. Harper remains one of the pioneer poets in establishing the foundation of distinctive Australian poetry. Yes, this is. Harper remains one of the pioneer poets in establishing the foundation of distinct Australian poetry. Next, critically analyze two poems of the Henry Kendall. Critically analyze any two poems of the Henry Kendall and reasons for their appeals to you. Next one, examine how political, social, and cultural issues are reflected in Australian poetry. कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं वो हमें बताना है. This is something very very important, guys. Next, we are coming to the next point. Comment on the impact of British poetry on 19th century Australian poetry. Impact. British का on 19th century Australian poetry. Write a detailed note on the characteristics of A.D. Hope's poetry. ये A.D. Hope को घोट के पी जाना guys. The issue of the land is the center of Judith Wright poetry. Discuss with the reference some poems. Next, discuss Chris Wall's Crabbe. I repeat. Crabbe as a poet with special reference to poem Melbourne. Rosemary Dobson poem Cockcrow speaks to the inner life of a woman. Yes, it's do talk about his inner life of a woman. What are the major traits of contemporary Australian poetry? Contemporary Australian poetry के traits क्या हैं वो हमें बताने हैं. Then we have the last section. This is सही वो first question जो आता है पेपर में 100% इन नो में से वो first question होगा. First one नहीं होगा सर, first two इन्हीं में से होंगे. First, how does the term the post-colonial relate to Australian literature? Discuss. Next, discuss the idea of bush, B-U-S-H. Discuss the idea of bush in early Australian literature. Next, how did the ballad tradition become representative of distinct Australian perspectives? कैसा लगे? How it been different? Discuss some of the recent trends of the themes in Australian literature. How do you define Australian literature? आप Australian literature कैसे define करते हो? Special features बताओ. The literature of Australia and India can be compared in many ways. Discuss. This is a good question, I must say. The literature of Australia and India can be compared in many ways. Discuss. Discuss the aboriginal. Sir, ये question तो आएगा. Discuss the aboriginal white Australian way of life with reference to the text you have read. Write a note on the emergence of migrant. Write a note on the emergence of the migrant aboriginal short fiction in 20th century. The last, not the least. What is the contribution of Patrick White Australian novel? ये मैं बता चुका हूँ पहले ही. तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने क्लियर करने हैं. सर क्वेश्चंस लिखने हो देखने हो तो मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना इमीडिएटली. क्वेश्चन सारे वहाँ मिल जाएंगे विद इन 10 मिनट्स वहाँ मिल जाएंगे आपको. एंड देन द आंसर्स के लिए नोट्स ले सकते हैं एंड यू कैन क्रैक योर पेपर इजीली. विश यू ऑल द बेस्ट गाइस.